What is documents handling? They collect LC claims, checks, bill of exchange, and trade documents on behalf of your bank. Correspondent bank means the bank which acts as an agent to the principal bank. If you are preparing for IBPS, RRB, Skill 2, Skill 3, now time is to boost up your preparation. And to aid in your preparation, we have a लास्ट मिनट फास्ट फॉरवर्ड बैच. अगर आप IBPS RRB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लास्ट मिनट में जो बूस्टअप चाहिए उसके लिए आ रहा है IBPS RRB का फास्ट फॉरवर्ड बैच, जिसमें ओनली वही कंटेंट रहेंगे जो आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसमें रेडी रेकनर भी रहेगा जो कि लास्ट मिनट MCQ होगा, सिर्फ जिसको पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो. So don't waste your time here and there. Start reading with the focused content so that you get selection in this attempt only. आज के सेशन में कवर करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट्स, फॉरेक्स के बेसिक्स, उसके बाद LRS हमने पढ़ा था और ये उस कड़ी में यूनिट 3 है. कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट्स नए लेसन्स हैं. होपफुली आपको मजा आएगा इस क्लास में. ठीक है. So in part 1, let's go into correspondent banking. Okay, what is correspondent banking in simple words? Banking, who is a correspondent bank means a bank abroad that acts as an agent of your bank, handling payments, collections and documents in a foreign country. So your bank doesn't need to open a branch there, right? तो correspondent banking क्या है कि आप अपना एक बैंकिंग एजेंट टाइप का ओपन करेंगे दूसरे फॉरेन कंट्रीज में. मान के चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस तो पूरे वर्ल्ड में है ही, बट हर सिटीज में अवेलेबल नहीं है. ठीक है. मैं जाता हूं तो बड़े बड़े जगहों पे, जैसे कुआलालंपुर हुआ, सिंगापुर हुआ. कुआलालंपुर में तो शायद मैंने देखा नहीं है, सिंगापुर में देखा है SBI के ब्रांचेस एंड ATMs भी है SBI के, बट हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है. दुबई में शायद एक जगह पे देखा है मैंने, दुबई में BOB के तो ब्रांचेस है ही, तो बट हर जगह पे नहीं होता है क्योंकि उतना फुटफॉल नहीं होगा. मान के चलिए आप टोक्यो में जाएंगे या फिर किसी क्योटो में, जापान के क्योटो में जाएंगे. ठीक है. फिलीपाइंस के मनीला में जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा इंडियंस के रॉस नहीं है. इंडियंस तो हर जगह पे अवेलेबल हैं बट रॉस नहीं है. वहाँ पे एक ब्रांच खोलना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव मैटर हो जाता है, राइट? So your bank doesn't need to open, but he appoints somebody with banking services, like business correspondents BC. क्योंकि वो रिमोट गांव, हर एक गांव में तो ब्रांच ओपन नहीं किया जा सकता, बट गांव से एक आदमी को BC बनाया जा सकता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट. Getting my point? Correspondent bank means the bank which acts as an agent to the principal bank, so that the bank doesn't open an account in every corner of the country, right? So why we need it? For global reach, for low cost, because opening a branch is a very expensive affair. License hurdles in many countries, there are many new rules. उनके banks, India के rules, उनके देश का नियम, बहुत कुछ होगा. And serve expats means Indians abroad can be served. Expats means our people, our men there. तो Indians abroad, our diaspora है, तो उनको भी serve किया जा सकता है through this network. And it will also help in cross border trade, international trade में document handling. In cross border trade we need so much of documentary loans. What are the documentary credits, documentary loans? What is document handling? They collect LC claims, checks, bill of exchange and trade documents on behalf of your bank. They deal in forex business. They manage in client relation. Okay. So what are extra cares needed? Risk and FATF recommendation. Why extra care is needed? Because cross-border correspondent banking is higher risk than local banking. International banking में risk ज़्यादा होता है, because there are country risk, operational risk, counterparty risk, interest rate risk, so much geopolitical risk, so many risks are involved. So money crosses countries, rules and jurisdictions, so banks must do deeper research. FATF recommendation 13 को भी फॉलो करना होता है. कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड EDD एनहांस्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस भी करना होता है.
इन इंटरनेशनल बैंकिंग सिंप्लीफाइड सीडीडी इज नॉट अवेलेबल. जैसे हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकता कस्टमर, उसको सिंप्लीफाइड सीडीडी के थ्रू कर देते हैं, स्मॉल अकाउंट्स एटसेट्रा. ये सब नहीं हो सकता. ओके, सो what is the golden rules? Banks must refuse to deal with correspondents who do not report large international or domestic transactions to their national control agency and do not have strict information sharing safeguards. अगर information वो conceal कर रहे हैं, if they hide information with such organizations and such countries, you should not do any business, because banking is a very tightly regulated business. Okay. तो फंक्शंस ऑफ करेस्पॉन्डेंट बैंक क्या करता है? क्लियरिंग हाउस में हेल्प करता है, कलेक्शन ऑफ बिल, मेकिंग पेमेंट्स, ओडी, शॉर्ट टर्म लोन्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज, बैंकर एक्सेप्टेंस, फॉरेक्स, कस्टोडियल सर्विसेज, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, क्रेडिट रिपोर्ट्स, ये सब में मदद करता है. सो आई वाज टेलिंग यू हाउ इट हेल्प्स इन डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे एक पॉइंट था, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग. You all know that in international banking, documentary credit plays a very huge role. What is documentary credit? The loans where documents are very much necessary, like letter of credit. Letter of credit में document मिलने पर ही आप LC रिलीज करते हो या फिर क्रिस्टलाइज करते हो. Getting my point? So why you need documents? To handle letter of credit. Letter of credit, in other words, called as LC and BG are called as documentary credits. You give loan against the specific documents. Clearing house functions, clearing house, sending money from one place to another. किसके अकाउंट में जाएगा, किसके अकाउंट से डेबिट होगा, किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, to whom it will be credited, from whose account it has to be debited, that has been categorized in clearing house functions. Okay. Collections like trade bills, collecting checks, payment follow-up, cash letters, lock boxes, safeguards. पेमेंट्स में आता है, ओवरड्राफ्ट एंड इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करता है. यू कैन ओपन सर्विसेज विदाउट एनी अकाउंट रिलेशनशिप, मतलब कस्टमर का अकाउंट नहीं है फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो. कहाँ पे आप कस्टमर को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एन अकाउंट? नॉर्मली जैसे नॉर्मल ब्रांच बैंकिंग में सर्विंग ए कस्टमर विदाउट हैविंग एन अकाउंट. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट? आप किस तरह से उस कस्टमर को हेल्प करते हो या फिर सर्विस देते हो जिसका अकाउंट आपके पास नहीं है? ऐसा कुछ एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सच ए केस? थर्ड, वॉक इन एनईएफटी. यस, वॉक इन एनईएफटी, वेरी गुड. डीडी में भी आप मदद कर सकते हो, डीडी में मदद कर सकते हो. सो सिमिलरली इन इंटरनेशनल बैंकिंग, in LC advising means tells the beneficiary that LC has been opened in their favor. LC confirmation, buyer's credit, supplier's credit, bankers acceptances, guarantees mean bank guarantee, bid bond guarantees, performance guarantee, bankers acceptance, accepting drafts from other sources, suppliers credit arranged from Indian importers. ये सब में आप मदद कर सकते हो. फॉरेन सर्विस, कस्टोडियल, ट्रेड रेफरल, सरप्लस, फंड रेजिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार.